फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। नमस्ते, जय हिंद। और हमेशा की तरह क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट में 7 बजे शार्प हम लाइव आपके साथ जुड़ गए हैं। मेरा नाम है आनंद नरसिम्हन और आज मेरे साथ हैं जेवी वॉल्टर। और आज हम बात करेंगे क्रिकेट की ही, लेकिन भारतीय क्रिकेट से पहले डाउन अंडर एक मज़ेदार मैच खेला गया जहां पर एक रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ, क्योंकि फ्री में ऑडियंस को आने की इजाज़त दी गई। खचाखच भरा हुआ स्टेडियम और सारे दक्षिण अफ्रीका के करीब 10-12 हज़ार फैंस थे जो दक्षिण अफ्रीका के लिए रूट कर रहे हैं। वो एक स्टेडियम, दूसरी स्टेडियम में आज मैं देख रहा हूँ न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के फैंस पहुंचे हैं, वो लोग खेल रहे हैं। मजेदार टेस्ट मैचेस का जो ये बन रहा है, माहौल बन रहा है, उसको देखकर मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द गेम में थोड़ा जान आ रही है। बट सुबह सुबह उठकर what a टेस्ट मैच, फाइनल डे, 210 रन्स टू चेज, इंग्लैंड इन द ड्राइवर्स सीट, जो रूट एंड स्टोक्स, ऐसा लगा इन्होंने ठोक दिया न्यूजीलैंड को और फिर 1 रन से जीते। 1 रन, या ओह आउटस्टैंडिंग। मैं पूरा मैच ट्रैक तो कर रहा था, बट सच कहूं तो आई थिंक अक्रॉस द 4 डेज, फर्स्ट 4 डेज मैंने शायद 7:30 या 8 से पहले मैंने Amazon प्राइम वीडियो नहीं खोला। आज मैं 6:12 से मैं फॉलो कर रहा था, बिकॉज मुझे लगा आनंद कि कुछ होने वाला है। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज आई नो विल टॉक अबाउट इंग्लैंड और ये कहां से कहां पहुंच गए हैं, बैसबॉल फलाना ढिमकाना, बट न्यूजीलैंड घर पे ना इतने साल से वो सीरीज नहीं हारी। तो ऐसे लग रहा है कि हाँ, इट्स गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर देम, बिकॉज यार ये इंग्लैंड की टीम ये तो 400 चेस करती है। इनको जो 200 जो भी था, 230 के आसपास जो बाकी थे, वो क्या बात है, 9 विकेट्स लेफ्ट। But I said something's gonna happen. और you know, as an Indian cricket fan, as journalist, हम तो उठते हैं जब हमारी टीम जाती है ऑस्ट्रेलिया। But this was the first, like, you know, क्या बोलूं मैं, नॉन इंडिया मैच जहां मुझे इतना मजा आया। और फिर देखो यार कहां से कहां, 80 for 5, लूजिंग 4 विकेट्स इन 10 ओवर्स। फिर रूट ने पहली पारी में 150 लगाए थे, आज 95 पे थे। ही एंड स्टोक्स लुक लाइक, यू नो, दिस इज अ केक वॉक। पर फिर यार विकेट्स गिरे, उसके बाद ड्रॉप कैच हुआ था। इट कुड हैव गॉन anyway, but it was only when James Anderson came to bat मैंने कहा चलो अब तो ये मैच न्यूजीलैंड का है। लेकिन फिर एंडरसन आगे बढ़ के चौका लगाया वैगनर को। मैंने कहा इनका तो 11वां नंबर, 40 साल का प्लेयर, वो भी बेसबॉल खेल रहा है। एंड बट देन द वे इट एंडेड, आई जस्ट लाइक वाओ, आई मीन वन फॉर द एजेस मैन, टोटली। एंड नॉट जस्ट दैट, मैं सोच रहा हूँ कि बैज खुद क्या सोच रहे होंगे, वो न्यूजीलैंड के लिए खुश हो रहे होंगे या इंग्लैंड के लिए निराश हो रहे होंगे। Tricky one, no? Yeah. And he also played 2016, if I remember correctly. He played his last test at home, didn't he? And he came out. Yes. He came out and bludgeoned. Again, they were. Australia को मारा था, and I think that was, he also scored the fastest ton. He became in his last test match, he scored the fastest test ton. He equaled Viv Richards and Misbah-ul-Haq, if I remember clearly, 56 ball 100, and he made 145 at that time. But I'm just saying mixed emotions. But एक बात बताओ जेमी, मजेदार क्रिकेट देखने को मिला, but this was a game which could have gone either way. किसी का भी हो सकता था, because that lady luck, नील वैगनर की किस्मत चमक गई कि भाई डाउन द लेग उसको कैच दे दिया और उसको मिल गई विकेट। बट इट लुक लाइक अगर थोड़ा सा और थिकर एज होता तो कीपर से दूर बाउंड्री चला गया होता। यू नेवर नो। So absolutely, this was just like that 2005 Edgbaston Ashes test match ना। कौन था? I think Michael Casperich and I think McGrath were batting. Lee was batting with them and it could have gone anywhere. कुछ बहुत कम रन चाहिए थे, या वो जीत के लिए जाएंगे या ड्रॉ के लिए खेलेंगे, समय निकल रहा है। And then that ball down the leg side, उनका कीपर था Geraint Jones, he died. So a lot of shades of some classic last wicket wins, loss, जो भी था। But यार मतलब मनोरंजन, you talked about a packed house. The Basin Reserve is my favorite ground in the world, क्योंकि वो एक इतनी खूबसूरत ग्राउंड है, हिस्टोरिक ग्राउंड है। वहां पे फैंस, और वहां के फैंस भी अलग है, you know, they're not the boisterous Aussies, they're not the, you know, the mad Brits, they're not the Bharat Army. इनकी एक अलग charm है। So to see all that, and then to see Wagner was coming off a terrible last match. He had some expensive figures. उन्होंने मैच पलटा, फिर उन्हीं के गेंद पे कैच छूटा, वो भी बेन फोक्स का। मैंने कहा यार इसका दिन नहीं है। देन ही टेक्स 2 catches, one at third man, one at fine leg,
and then he comes back और आखिरी विकेट वो ही लेते हैं. तो it's one of those days which unfortunately we don't get to see enough of. पर ऐसे दिन को देख के यार यू रियलाइज के भाई टेस्ट क्रिकेट एटलीस्ट मेरे हिसाब से इट्स इन वेरी गुड हेल्थ. छोड़ो ये बातें कि टेस्ट क्रिकेट मर रहा है, कुछ नहीं मर रहा है. मैं 20 साल से सुन रहा हूं, सब ठीक है भाई, सब ठीक है, सब ठीक. आई थिंक देयर इज स्पेस फॉर ऑल फॉर्मेट्स टू प्रॉस्पर एंड एज लॉन्ग एज बिल्कुल प्लेड मजा आएगा. और वैगनर को मानना चाहिए यार, जान लगा दी बंदे ने. इतना कंधा लगाना और इतनी जान निकालना, यू नो, टू बोल कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली बोल शॉट, वो भी बॉलर के अंदर से जान निकाल लेता है, जान खींच लेता है. पर बैसबॉल की बात करते हैं. क्या आपको लगता है कि आज बैसबॉल के अब क्रिटिक्स खड़े हो जाएंगे, देखो इट इज नॉट वर्किंग, या आपको लगता है कि भाई यही एटीट्यूड होना चाहिए? अगर इफ इट इज वर्किंग यू विल हैव फेलियर्स, टेक इट इन योर स्ट्राइड. एंड आई थिंक वो स्टोक्स के पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया कि मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा इस मैच में. रिजल्ट को छोड़ के मैं इस मैच में कुछ भी चेंज नहीं करूंगा. डिसीजन टू यू नो डिक्लेयर enforce the follow on and of course मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा. और स्टोक्स खुद ही लिंप कर रहे थे, लेकिन फिर भी क्या प्रेजेंट कैप्टन, पास कैप्टन ने क्या साझेदारी रची. मजा आ गया उनको देख के बैटिंग. एब्सोल्युटली नहीं. आई थिंक जहां तक आनंद बैसबॉल की बात है, इट हैज चेंज द गेम इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. मतलब साल भी नहीं हुआ, 10 महीने हुए तकरीबन इस बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मकलम की जोड़ी. बैसबॉल इज अ वेरी कैची टर्म, लेकिन अगर वो मनोरंजन दे रहा है, अगर वो एंटरटेनिंग क्रिकेट दे रहा है, तो इफ दे, आई मीन यू जस्ट समड इट अप सो वेल कि दे डोंट माइंड इफ वन लॉस हैपेंस ना. और ये हारे भी कहां है, शायद ये पहली बार हारे हैं, दूसरी बार हारे हैं, राइट. घर पे हो, बाहर, ये पाकिस्तान जाके उन विकेट्स पर इन्होंने उनको हराया. हैरी ब्रुक ने कुछ नहीं किया था उससे पहले, बंदे ने वहां डेविड गावर का रिकॉर्ड तोड़ दिया. अब जाके उन्होंने 180 मारे. तो दिस इज अ फैंटास्टिक टीम टू वॉच. एंड लाइक यू सेड, दे डोंट माइंड लूजिंग. और अगर ऐसे हारते हो इतना, मतलब आई डोंट थिंक इट विल फील एक्चुअली लाइक अ लॉस टू देम, बिकॉज आई जस्ट सेड ना कि जेम्स एंडरसन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड नंबर 11 इन द हिस्ट्री, राइट, वो आके जो चौका मार रहे. उन्होंने कब चौका मारा? ही वॉक डाउन द ट्रैक एंड ही स्मैक्ड वैगनर के चेहरे पे शॉक, केन विलियमसन के चेहरे पे शॉक. तो इफ दे आर गोना प्ले दैट ब्रांड एंड एंटरटेन अस, एंड आनंद सबसे बड़ी बात जो कर रहे हैं, दे आर मेकिंग टेस्ट क्रिकेट रेलेवेंट अगेन. तो इफ दे लूज अ फ्यू मैचेस, ठीक है यार, दे वोंट माइंड. एंड आई वाज लाइक आई वाज वाचिंग मकलम, क्योंकि कैमरा बहुत बार वहां पे गया, क्योंकि ये लोकल बॉय है ना, ये न्यूजीलैंड है. ही इज वेरी ग्रेम, बट द वे ही केम आउट एंड ही गिव अ हग टू टिम साउदी. ये दोनों वर्ल्ड कप फाइनल साथ में खेल चुके हैं. टिम साउदी बॉट इनटू ब्रेंडन मकलम स्टाइल ऑफ कैप्टनसी 6-7 years ago, 8 years ago. तो जाहिर सी बात है कि he'll have mixed emotions like you said, but यार बैसबॉल खूब चलेगा. एंड लाइक आई सेड, अगर बैसबॉल के चलते हमें ऐसे ऐतिहासिक टेस्ट मैचेस देखने को मिलेंगे, चलो यार, कोई फुस-फुस नहीं हुआ, लेट्स एंजॉय इट. करेक्ट, क्योंकि 5 दिन का क्रिकेट आपको देखने को मिला. चैलेंजिंग, एब्सोल्युटली, मैच को इंटरेस्टिंग बना दिया, खेल को इंटरेस्टिंग बना, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आके आप जब इसको खेलने जाते हैं, आप इस एटीट्यूड के साथ चल रहे हैं कि भाई अगर किस्मत में हारना लिखा है तो हम हारेंगे, चाहे हम कैसे भी खेलें, लेकिन हम जीतने के लिए खेलें. लेट्स प्ले टू विन, लेट्स प्ले टू मेक इट इंटरेस्टिंग, लेट्स प्ले टू फाइट. एंड मुझे समहाउ आई सब्सक्राइब टू दिस. मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे खेलते हो, वो मैटर होना चाहिए कि आप किस अप्रोच के साथ खेलते हो. रिजल्ट कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं होता. बिल्कुल. और एक चीज मैं कहूंगा वेरी वेरी ब्रीफली, इस बेसिन रिजर्व पिच का जो it has to be given, it played as big a role, right? आजकल के टाइम में जहां यहां हम बैठ के 3 दिन के मैच देख रहे हैं, for baseball to work आपको एक proper true टेस्ट विकेट चाहिए. और ये था, मतलब डे 5 पे विकेट्स गिरे, यू नो, बैट्समैन कैन वॉक डाउन द ट्रैक, बेन स्टोक्स कैन बैट ऑल दैट टाइम सबड्यूड, जैक लीच आके 1 घंटा बैटिंग कर सकते हैं. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट हैज टू बी गिवन टू द क्यूरेटर्स बेसिन रिजर्व पे, जिन्होंने हमें ऐसा प्रॉपर 5-day टेस्ट मैच पिच दिया. Also, as good as Wagner was, as good as all these guys were, I think the pitch was one of the best we've seen for a long time, Anand. Yeah, it's a nice, it was a nice surface, and I don't know if this was a drop-in pitch, because generally drop-in pitches don't play so true. And if वहां पे नहीं है शायद. So then they really have done a phenomenal job. चलिए, न्यूजीलैंड और वहां के इस गेम में के 1-all हो गया सीरीज में. आप थोड़ा आप कोई और टीम होती तो ये भी आर्गुमेंट है कि भाई 1-all था, 1-0 से आप आगे थे, आप आराम से सेफ खेल सकते थे, अपने आप को पर ऐसा इस एटीट्यूड के साथ आप कितना खेलोगे यार. जियो अपनी जिंदगी वाला एटीट्यूड के साथ आपको खेलना चाहिए. जब तक चल रहा है अच्छा है. मैं तो चाहता हूँ और टीमें ऐसे खेलें, बिकॉज मेक टेस्ट मैच सो मच मोर एक्साइटिंग. चलिए, अपने
लेट्स टॉक अबाउट इंडिया एंड इंडियन कैंप. 2-3 चीजें हैं जो थोड़ा सा वरीसम है. एक जसप्रीत बुमराह जो अब आईपीएल भी नहीं खेलने वाले हैं, उनकी बैक इंजरी आई थिंक इट्स क्वाइट सीरियस, उनको सर्जरी करनी पड़ेगी ये कहा जा रहा है. दूसरा ऋषभ पंत जो अब कम से कम 2 साल के लिए आउट है, ऐसा गांगुली कह रहे हैं. तो दैट थ्रोज इन अ लॉट ऑफ थिंग्स इनटू द churner, if I may say, because of then KS Bharat becomes a very strong possibility to be a regular as the test wicket keeper. बुमराह की जगह बॉलिंग की अगुवाई कौन करेगा अक्रॉस फॉर्मेट्स? ये सब कुछ चैलेंजेस हैं अब जेमी. बहुत 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 बड़ा चैलेंज है, और जिस महान खिलाड़ी का यहाँ पे तस्वीर लगाया है जसप्रीत बुमराह, of course we know how serious it is, and you know how serious these back injuries end up being. मुझे तो बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि I don't think हम जसप्रीत बुमराह को तीनों फॉर्मेट में कभी खेलते हुए देखेंगे, right? As a fast bowler with that speed, with that short run up, जो उनकी लोड है, जो इनकी बैक पे with that quirky action, and it's not the first time कि उन्हें सर्जरी से जाना पड़ा. This is going to be perhaps a career defining. और वनडे वर्ल्ड कप में ना तो पंत है जैसे कि आपने कहा, ना तो बुमराह है. इट्स अ मैसिव लॉस, स्पेशली बुमराह. आई थिंक आएंगे वापस जरूर, लेकिन किस फॉर्म में आएंगे, किस माइंड फ्रेम से आएंगे? Will he be able to play 3 formats? I just have a gut feeling that the answer is no, but we wish him a speedy recovery because he is a champion bowler. ये जो बंदा है, he's a once in a lifetime bowler. We've talked about India की fast bowling depths क्या है, लेकिन मैं इस बंदे को बिल्कुल टॉप पे रखता हूं. To come in and change the game across 3 formats, a huge loss. And as for Pant, I mean, I don't know. I mean, it was our own Cricket Mix reporter Sahil Malhotra who broke the news कि it's not 3-4 months, it's going to be almost 10-12 months. और अब अगर गांगुली कह रहे हैं कि 2 साल है, I hope Sahil is right and not Dada, because we need that guy back in our team as soon as possible here. Because they're saying that for him to start walking properly, it's going to be at least a year. From walking, you got to get to running, and from running to take the load and to get into keeping and to prep yourself. It's a long process. You should not hasten that recovery. One good thing is that Pant has age on his side. So he is going to lose out perhaps 2 years, but he's still going to be there in his prime, quite young, to go ahead and play at least another decade of cricket if he is able to stay fit. But with Bumrah, it's a cause for concern because he's going for surgery. Then that means recovery will take some more time, and like you said, then he will have to then prioritize white ball cricket, red ball cricket. He won't be able to do all formats. That looks very difficult, especially given the fact that it's not the first time he's struggling with injuries and having to go with the long recovery phase. But चलिए, ये 2 चीजें हैं which is a cause for worry. बट अगर आप इंदौर की बात करें तो इंदौर से क्या खबर आ रही है जेमी? कैसा लग रहा है वहां पर? पिच बता रहे हैं कि इट लुकिंग ब्राइटर एंड लिटिल मोर पेपी. रोहित शर्मा तो ये भी कह रहे हैं कि अहमदाबाद में हम ग्रीन पिच की मांग भी कर सकते हैं, वो नया चाहिए. तो ये हवा ये बहुत ऐसा मुझे लग रहा है गूगली है, दूसरा है, बट फिर भी इंदौर में क्या लग रहा है? Look, I think ये day 4 तक तो जाएगा, because like Sahil has been reporting and I've been following social media, tracking all the agency wires वो जो आते हैं, हमारे net practice के videos आते हैं ANI से. I've been watching very closely. Raging turner तो नहीं है, but also Raging turner हमें दोनों पहले मैच में मिला ना. There was some turn. I think दिल्ली की पिच बाउंस बहुत कम थी, और वहां पे जिस तरह से अश्विन और जडेजा ने इनकी हवा निकाल दी, I think the Australian batsman will probably be a bit more comfortable playing in this match. But again, that's it, Anand. इसी मैच पे इंडिया 2 टेस्ट मैच खेल चुकी है, इतने बड़े मार्जिन से जीते हैं, एक 4 दिन में, एक 3 दिन. एंड अश्विन का जो रिकॉर्ड है वहां पे इंदौर में, राइट, he looms as the biggest threat. So yes, it's a red soil pitch. It's probably not going to be a raging turner. कह रहे हैं कि क्योंकि ये सोइल जो है 2018 में मुंबई से लाया गया था, वांकड़े और ब्रैबोर्ड वाला, जहां पे बाउंस है, probably the toss more than the last 2 matches, Anand, is actually going to come into play because यहाँ पे runs है. Runs कहूं तो मुझे कहीं ना कहीं 400 दिख रहे हैं यहाँ पे. But again, that's the team that bats first. और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने खराब बैटिंग करी दोनों पहले मैच में, winning the toss actually didn't save them at all. तो अगर यहाँ पे रोहित शर्मा टॉस जीतते हैं, जो कि हम चाहते हैं, you're going to see 100 from at least one batsman. And once you get 400 in these conditions, और आप जानते हो कि रफ आएगा, बेशक आएगा, और अश्विन जडेजा पीछे हैं, it is going to be runs, but I still say 4 days में इंडिया ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाएगी. Somehow one gets the sense you wanted to all go according to plan. That Rohit Sharma calls the toss right, bats first, the India put up 400, and then they don't have to bat again, and the match ends in 4 days. But
let's try and see how do you see the Australia mix. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको क्या लगता है क्या होगा, क्योंकि डेविड वार्नर नहीं है, पैट कमिंस नहीं है, स्टीव स्मिथ कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा गेम के पेस को कंट्रोल करे, थोड़ा सा स्लो इट डाउन अ बिट, इंडियंस को रिदम में मत आने दो, थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा कंट्रोल करो, स्लो डाउन द गेम अ बिट. उस्मान ख्वाजा तो स्वीप किए जा रहे हैं, बाकी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं. ट्रेविस हेड की क्या भूमिका होगी, कैमरन ग्रीन कम्स इनटू प्ले, मिचेल स्टार्क कम्स इनटू प्ले. तो आपको क्या लग रहा है कि क्या कैसा एक ही डजंट हैव टू मच टू चूज फ्रॉम स्टीव स्मिथ, बट स्टीव स्मिथ क्या अपनी कैप्टनसी की छाप छोड़ेंगे? उनके सिलेक्शन में क्या आपको लगता है कि कमिंस के मुकाबले थोड़ा अप्रोच डिफरेंट होगा? Well, I think in थोड़ा डिफरेंट होना पड़ेगा. You rightly said कि इनके पास ऑप्शन है नहीं. डेविड वार्नर गए, जॉश हेजलवुड नहीं है, एस्टन एगार को उन्होंने वापस भेज दिया. लेकिन स्मिथ, अगर आपको याद होगा आनंद, स्मिथ वाज गिविंग स्टेटमेंट्स बिफोर द फर्स्ट टेस्ट मैच कि हमारी टारगेट रहेगी 500-525 रन मारेंगे. बेचारे 100 नहीं मार पा रहे, तो स्टीव स्मिथ थोड़ा कम बोले. एंड आई थिंक ही इज बीन अ मैसिव लेट डाउन. इतने एक्सपीरियंस, इतने अनुभवी बैट्समैन इंडिया, जिनकी इनका रिकॉर्ड अच्छा है, इंडिया आके टू सी हिम स्ट्रगल, आई थिंक ही विल बी द फर्स्ट टू से कि me as well as Cummins have been the biggest letdowns, because there's enough players in this Australian team who lack the experience. So Smith will have to be at his best as a captain. Agar toss jeete, I think they would bat. Travis Head को दूसरा चांस मिला. He said, मैं शौक था कि मुझे नागपुर से बाहर किया गया था, लेकिन the way that he got that runner ball 43 on second day of the second test, रोहित ने खुद कहा कि भाई I had to go into defensive mode. तो स्मिथ, ऑस्ट्रेलियन टीम चाहेगी कि हेड वैसे खेले यार, but beyond that रन्स कहां से आएंगे? बेचारे हैंड्सकॉम रन बना रहे हैं, but you know there's too much on him. ख्वाजा is sweeping, Alex Carey is sweeping too much. इनके पास ऑप्शंस नहीं. आई थिंक कैमरन ग्रीन के आने से कुछ स्टेबिलिटी आएगी बैटिंग में, बॉलिंग में, बट दैट सेड लड़का खेला भी नहीं है इंडिया में अब तक एक टेस्ट मैच. एंड स्टार्क has said कि आई एम विलिंग टू play through pain. Once again, I mean, I wish them all the best. I hope we get a competitive match. लेकिन फिलहाल इस ऑस्ट्रेलियन टीम में, इस डिप्लीटेड टीम में, मुझे लगता नहीं है ज्यादा फायर पावर होगा. बेटर देन दिल्ली एंड नागपुर, बट आनंद नॉट इनफ टू compete, not enough to beat India, sadly. And after watching KL Rahul and Shubman Gill in the nets, are you willing to give KL Rahul the Indore Test match? Well, look, because इसी मंच पर, इसी क्रिकेट मैच पर इतनी बार मैं कह चुका हूं कि हालांकि मैं चाहता हूं कि शुभमन गिल खेले, something inside me, at least till yesterday, said कि नहीं, राहुल को चांस मिलेगा. So I cannot suddenly change my track. But I think the chance of KL Rahul playing have significantly diminished in the last 24 hours. जिस तरह से because of the way that apparently Shubman Gill has been batting for 2 days. कल साहिल ने बताया था हमें कि लाइव शो पे बंदे ने 4 बार बैटिंग करी. You've been at grounds, you've covered international team, Anand, you know no batsman bats 4 times in a day. And apparently the way he took on Jadeja, साहिल ने बताया था कि उन्होंने जडेजा को टॉप टियर में मारा छक्का, राइट? तो अगर ऐसे बैटिंग आप कर रहे हो and against a struggling KL Rahul, I think the fact that लड़के ने 4 बार बैटिंग करी, I think he might play. I want him to play, but if he does not play, I won't be surprised, because I know the kind of mindset that Rahul Dravid has gone into this series with. और मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने वाइस कैप्टनसी का टैग हटाया KL Rahul से, it's perhaps a sign कि लड़का तू जाके खेल ले, तुझ पे इतना प्रेशर नहीं है अभी. I think this is how it's also going to play out. Yeah, you see a possibility where perhaps Shreyas Iyer may be asked to sit down, and both Gill and KL Rahul play, where then Shubman Gill opens the batting and KL Rahul comes down at number 4, giving him some more time. यार ये ना, मैं सहमत हूं, लेकिन अगर ये होगा, ये श्रेयस के साथ इतना अन्याय होगा ना. That boy has done every single thing required of him. If they think along those lines, I'll be like pulling out whatever hair I have left, because that would be totally unfortunate on. And then, और अगर ऐसा हुआ आनंद, then it shows कि Rahul is being played for non-cricketing reasons. So it would set a very dangerous precedent if that happens. ये नहीं कह रहा हूँ कि impossible है, possible है, but it would send all the wrong signs out right now. Yeah, because the numbers also stack up against KL Rahul. In fact, Shreyas Iyer has performed far better than KL Rahul. And he deserves a chance in the side more than KL Rahul. So it's got to be on the opening slot. Somewhere I'm sure, I don't want to be in the shoes of Rahul Dravid or Rohit Sharma at this point, but both of them were standing and watching. Now, what I saw that video too, where Rahul and Rohit were actually
watching the two of them bat. They were watching from the center, so they had a view of both the nets, and they were watching both of them bat for a while, and they had a conversation. And Shubman Gill has been given a extended batting, this one. I just have a feeling they're going to wait uh, till the last moment before they decide. I think Yes. tonight, I think tonight before they go to bed, Rahul or Gill, one of them will know. Both of them will know what's going to happen the next day morning. Otherwise, the others won't know. Somehow, I just feel that itna you have persisted with KL Rahul. Just give him the Indore Test match. Just give him that one test more. Somewhere one gets the sense that he's just one inning away from getting back into form. Now, if he gets back into form, it's a happier problem for Bharat than anything else. But not taking away from Shubman Gill. I'm firmly on the fact that you have to figure out a mechanism where you can get Gill into the mix. But if you're looking at World Test Championship and you want a settled side, then you have to persist with somebody who's going to be delivering for you. Because if he doesn't play tomorrow, KL Rahul, then he's not playing for the World Test Championship, irrespective. Absolutely. You agree with that? That agar wo kal nahi Yeah, no, absolutely. Bench for 6-8 months aram se, at least. Absolutely, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो. If he does not play tomorrow, he does not fit into the Ahmedabad test, and then he does not fit into that final, the final which is going to be played at the Oval. Or Oval is one of the most Asian tracks in the UK. In that batting वहाँ पे चलती है. It's a flat track. और days 3 and 4 पे, खासकर 4 and 5 पे actually थोड़ी spin लेती है वो. So India would be very happy कि final वहाँ पे होगा. But again, if he scores runs, yes, I think he's that good कि score नहीं है. But अगर उनके खिलाते हैं और वो run नहीं बनाते हैं, what state is that poor guy going to be in himself? He's already, he won't say it publicly, लेकिन उनके ऊपर पूरा दुनिया का बोझ है फिलहाल right now. And imagine if he fails again, you've lost him even further. So ideally, I would say इन्हें अभी break दे दो. Let him take some time out. Let him, whatever he needs to come back as a stronger, mentally and stronger physical batsman. But also, you know कि शुभमन गिल आपको 10 साल दे सकते हैं. Time is now. You're 2-0 up. You cannot lose the series. रोहित शर्मा ऑलरेडी कह रहे हैं कि शायद हम सीमिंग ट्रैक देंगे अहमदाबाद में. अगर आप ऐसे सोच रहे, इतने लेफ्ट फील्ड आप सोच रहे हो, तो थोड़ा गिल को खिला लो यार, क्या जाएगा आपका. But ठीक है, we'll see what happens, and then we'll catch up on Yes. the evening 7 p.m. live once again after the day one's play. Whichever team they decide to field, the captain and the coach. My eyes are not going to be on who's opening the batting. Frankly, we're going to end on that. My eyes are going to be on Virat Kohli. I believe he should get 100. And if Kohli is not getting 100, then we have to seriously look at that slot and also ask him a few questions too. That whether he should choose which formats to then focus on, because that space, that number is an important number. There are 2 or 3 players who between their 1 and 4 can be slotted in with huge amounts of talent who should be given some more time. Not that Kohli is not among the runs, but I think he should get 100 in this test. That's what I'm looking for from a purely India perspective and a Kohli perspective. Well, if there's one pitch he's going to get runs, it's going to be Indore. If it's going to be anywhere, it's going to be Indore. So I'm on the same page. I think he's going to do something. You're going to do something. So you're also going to watch out for Kohli, or are you looking out for somebody else? So are you still going to free opening? कौन कर रहा है? पहले opening, because that's actually a bigger problem. But yes, Virat Kohli is definitely on my radar as well. Lovely. So we catch up once again on Cricket Matlab. Yes. Cricket Next 7 p.m. live. That's what it is. Roz ka wada. For the moment. Bye for now. Thank you. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.